Assalamualaikum dear friends. Today we are going to discuss about unit third of class 12th, that is kinship, caste and class. In the early society, that from 600 BC to 600 CE. इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े, what we found, हमने देखा कि there were several changes, especially in economic and political life between 600 BCE and 600 CE. Some of these changes influenced societies. For example, if we take the example of extension of agriculture into the forested areas, it transformed the lives of these forest dwellers. Craft specialists often emerged as a distinct new social group. The unequal distribution of wealth sharpened the social difference among the people in these times. Historians used textual traditions to understand these processes. Some texts lay down norms of social behaviors, others describe and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions as we will see. Each text and inscription was written from the perspective of the special social categories. So we need to keep in mind who composed what and what for. That means what was composed and whom was to be composed. We also need to understand or consider the languages used and the ways in which the text circulated. Text allows us to piece together attitudes and practices that shaped social histories. In focusing on the Mahabharata, a colossal epic running in the present form into over 1 lakh verses with depictions of a varied range of social categories and situations, we draw one of the richest texts of the subcontinent. It was composed over a period of 1,000 years, that's from 500 BCE onwards. And some of the stories it contains may have been in circulation even earlier. That means जो महाभारत बनी तकरीबन हजारों साल इसको लगे कंपोजिशन के लिए. इनकी जो इसमें स्टोरीज वो इससे पहले भी वजूद में आई थी. सेंट्रल स्टोरी जो इसमें थी, दैट्स अबाउट 2 सेट्स ऑफ वेरिंग कजिन्स. तो इस टेक्स्ट में हमें इंफॉर्मेशन में लेइंग डाउन द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर के बारे में मिलता है, वेरियस सोशल ग्रुप्स के बारे में. ओकेजनली, दो नॉट ऑलवेज, द प्रिंसिपल कैरेक्टर सीम्स टू फॉलो दीज नॉर्म्स. What does the community or the community conformity and the norms and deviations from them signify? इसमें जो हमने आज तक पढ़ा कि लास्ट ये हमारा प्रीवियसली टॉपिक जो थे उनमें हमने पढ़ा था. अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं about many rules and different practices were followed by the people. Very often families were part of larger network of people whom we define as relatives. Blood relation can defined in many different ways. We simply use the relatives a term kinfolk. Many is considered as the most important Dharma Sutra and Dharma Shastra. It was compiled between 200 BC and 200 CE. जो इसमें क्या है, इसमें जो दिए गए थे, they were the rules about governing the social life of the people. इस तरह during Mahabharata age, Gotras were considered very important by higher varna of societies. Social differences prevailed and integration took place within the framework of caste system. सूत्रास के मुताबिक क्षत्रियास could be the kings. इस तरह ओरिजिनल वर्जन ऑफ महाभारत जो था वो संस्कृत में होता था. इसमें जो डिस्क्रिप्शन वगैरह थी, that were about battles, forests, places, settlements and other things. इस तरह अगर हम इस फाइंडिंग्स के बारे में बोलेंगे कि फैमिलीज के बारे में, वेरियस टर्म्स के बारे में इस महाभारत में हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो ओल्ड स्टोरी बुक्स उनके बारे में मिली. इस तरह अगर हम फैमिलीज की बात करेंगे तो यहाँ पे वेरियस नंबर ऑफ फैमिलीज से फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. रिलेशन विद वन अनदर थी, और दे शेयर द फूड, दे शेयर द हाउस, दे शेयर द थिंग्स विच दे इनहेरिटेड. इस तरह अगर हम पैट्रिलिनिटी एंड मैट्रिलिनी की बात करेंगे तो जैसे पैट्रिलिनी मीन्स दैट द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द फादर एंड द मैट्रिलिनी मीन्स डिसेंडेंट्स फ्रॉम द मदर. ये भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करें. सो लेट वी स्टार्ट फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज. अगर हम फैमिलीज की बात करेंगे तो फैमिलीज में हम क्या देखें, वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड. हम ऐसे ही ले लेते हैं. वी डोंट कंसिडर रिलेशन, वी डोंट रिस्पेक्ट. उतना नहीं होता था फैमिली, या उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता है. रिकॉर्ड होता है लेकिन इन डेली लाइफ हम जैसे भी करते हैं काम तो उस हिसाब से नहीं होता है. यू मे ऑफन नोट्स दैट
और नॉट ऑल फैमिली मेम्बर्स आर आइडेंटिकल, यानी सब लोग एक जैसे नहीं होते, दे वेरी इन नंबर ऑफ मेम्बर्स। जैसे फैमिलीज हुआ करती थी, सब एक जैसी नहीं हुआ करती थी फैमिलीज, किसी में 2 बंदे, किसी में 8, किसी में 10, तो यहाँ पे भी वही हाल था। इसी तरह देयर रिलेशन विद देयर वन एंड अदर, वो भी एक जैसी नहीं होती थी। इसी तरह ऑफन पीपल बिलोंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्स, ये तो आम होता है, जो लोग एक ही घर में रहते हैं वो दे शेयर देयर थिंग्स। इसी तरह वर्क शेयर करते हैं, दे परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। फैमिलीज यूजुअली वर पार्ट ऑफ द लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल, जिनको हम रिलेटिव्स बोलते हैं, और इन्हीं में हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं किनफोक। जो फैमिलियल टाइन होती थी, दे वर रिकॉर्डेड नेचुरल, कुदरती तौर पर, एंड वर बेस्ड ऑलवेज बेस्ड ऑन ब्लड। They are defined in many different ways. For instance, some societies record cousin as being blood relations, whereas others do not. इस तरह अर्ली सोसाइटीज़ में हिस्टोरियंस ने रिट्रीव किया इन्फॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिलीज फेयरली इजली, क्योंकि इट्स हाउएवर फॉर मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिलियल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हिस्टोरियंस क्या किया, दे इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप्स. These are important because they provide an insight into the people think. It is likely that some of these ideas would have shaped their actions, just as actions may have led to changes in attitudes. इस तरह ideal of patrilineage की बात करेंगे तो patrilineage means tracing descent from the father. इस तरह matrilineage means the term used when we descent is traced through mother. अगर हम एक लेवल की बात करेंगे जहाँ पे महाभारत इज ए स्टोरी अबाउट दिस, जिसमें लिखा है कि डिस्क्राइब्स ए फ्यूड और लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन्स, दैट इज करवास एंड द पंदवास, हु बिलोंग टू सिंगल रूलिंग फैमिली, जिनके बारे में जिनकी लड़ाई। और यहाँ पे क्या हुआ था, कुरवास जो हुआ था, दैट ऑफ द कोरोस, ए lineage dominating one of the जनपदास, अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट एंडेड जो हुआ, इसमें क्या हो गया कि पांडवास इमर्जेड विक्टोरियस, सोचिए कुरवास था, दे वर ऑन द लूजिंग साइड, दे लॉस्ट द बैटल। तो इससे क्या हो गया कि पैट्रिलिनियल सक्सेशन जो था, इट वाज प्रोक्लेम्ड। पैट्रिलिनियल एग्जिस्ट प्रियर टू द कंपोजिशन ऑफ द एपिक। सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत जो हुआ करती थी, दैट वाज द रेनफोर्स्ड द आइडिया दैट इट वाज वैल्यूएबल। और अगर हम रूलिंग डायनास्टी की बात करेंगे, 6 BCE की बात करेंगे, तो प्रोक्लेम किया यही सिस्टम अडॉप्ट हुआ। ऑल्सो देयर वर वेरिएशंस इन प्रैक्टिस, समटाइम्स देयर वर नो सन, तो यहाँ पे क्या होता था, अडॉप्टेड लिया जाता था, यहाँ ब्रदर को सक्सीड किया जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सक्सेशन हुआ करता था, जो डिसेंडेंट्स लिए जाते थे, दे वर फ्रॉम द पैट्रिलिनियल साइड. Okay, that's all about this, and in the next topic we will discuss about the rules of marriage. Okay, thank you.